Good morning. I am Tushar, student of BSc Chemistry on a third year. Today, I am here to give a presentation on the topic energy production in the living organisms. So let's get started. First, we will talk about respiration. What is respiration? Because energy which we get is by the process called respiration. So first we will discuss about respiration. So respiration is a stepwise oxidation of food which at the end gives energy in the form of ATP. सो सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन हो जाए फूड को ब्रेक डाउन करने से उसका ऑक्सीडेटिव स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो जाए फूड का, उससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये विद इन द सेल ओकर होती है, इसलिए हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, बट समटाइम इट्स मिसअंडरस्टूड, एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी भी होती है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। रेस्पिरेशन इज एनर्जी प्रोडक्शन process, but breathing is a simple process, simple physical process in which we inhale and exhale oxygen, or we can say there is a exchange of gases within the organism, from the between the organism and the outer environment. अब हम एनिमल्स हैं, वी आर मैमल्स, राइट? सो एनिमल्स यूजेस एनिमल्स और यू कैन से ह्यूमंस, वी कैन कैटेगराइज एज डिफरेंट। तो वे यूज़ करते हैं लंग्स को, बट प्लांट्स यूज़ करते हैं स्टोमेटा, द स्मॉल ओपनिंग्स, तो उनको यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, तो फूड एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देती हैं एज एटीपी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप की होती है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होती है दो टाइप की, पहली होती है एरोबिक, दूसरी होती है इनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द सिंपल टर्म्स हम बात करें तो जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वहाँ होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है वहाँ होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बट इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है बट सेल इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट, तो उस टाइम पे भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो जब हम उसे एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो होगी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है बट सेल उसे यूज़ भी कर पा रहा है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगी जिसके अंदर सेल या तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है ही नहीं, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है बट सेल उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, या फिर सिंपल हम बात करें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आगे बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यूटिलाइज भी की जाती है, तो इस केस के अंदर हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन हम बात करें एनारोबिक के बारे में, तो एनारोबिक के अंदर हमारा फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है उसका, क्योंकि प्रेजेंस बहुत लिमिटेड होती है ऑक्सीजन की, या फिर प्रेजेंट ही नहीं होती ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता फूड का। तो यूकैरियोटिक्स हमें ज़्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। और जो हमारी एनारोबिक है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में। तो ह्यूमंस के अंदर हम यूकैरियोटिक्स है तो वो दोनों ही होंगी। एरोबिक तो हमारी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हो जाती है। एनारोबिक हमारी जब जब हम हैवी एक्सरसाइजेज और एक्सेसिव एक्सरसाइजेज कर लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें पता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एनारोबिक प्रोसेस हमारी चलती है, उसके अंदर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो ये थी हमारी रेस्पिरेशन की जनरल। अब हम इसका पूरा रेस्पिरेशन का पाथवे पढ़ेंगे कि हाउ द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द फूड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारा जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में।
2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड या पायरुवेट हमें जो मिलता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो उसके 2 मोल हमें मिलते हैं। अब ये जनरली ईएमपी पाथवे फॉलो करती है, इसे ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्डन मेयरहॉफ पेरेनेस पाथवे। अब ये विद इन द सेलुलर रेस्पिरेशन है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर भी ये परफेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस करती है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे का। अब इसके अंदर हमारा ग्लूकोज ही यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हमारा फेवरेट सबस्ट्रेट है। मतलब जो हमारे सेल जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए वही सबको पसंद आएगा। मतलब भाई अब अगर लोकली बात करें तो जो बंदा हर किसी की मदद करता है या फिर हेल्प करेगा, ईजिली सबको परसुएट कर पाएगा, बट समवन हु इज़ सो स्टिंजी स्टबर्न, so he will not be the favorite one. So who respect everyone, who does, who obey the elders, तो वो फेवरेट होएगा सबस्ट्रेट। इसी तरह सबस्ट्रेट की बात करें तो ग्लूकोज ईजिली ब्रेक डाउन होएगा, ज़्यादा एनर्जी देगा, तो ग्लूकोज हमारा फेवरेट सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट और भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। फैट्स की बात करें तो फैट जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन हो सकता है, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब फैटी एसिड जो है वो फर्दर डिग्रेड होके हमारा एसिटाइल एंजाइम ए देगा, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे में जो फर्दर जब हम क्रेब साइकिल और वो सब मैं बताऊंगा तो उस टाइम पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ किया जाएगा। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, जो आगे जाके वो भी सेम क्रेब साइकिल के अंदर हमें देखने सॉरी ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह प्रोटीन भी एक सबस्ट्रेट की तरह यूज़ किया जा सकता है, जो कि अमीनो एसिड में डिग्रेड होगा और फर्दर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम या पायरुविक एसिड हमें दे देगा। बट हमारा फेवरेट सबस्ट्रेट विल ऑलवेज बी ग्लूकोज। इसी तरह हम बात करें तो हमने देखा कि वो हर प्रोसेस के अंदर फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो ये सब हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है? बट इट्स नॉट ट्रू। रेस्पिरेशन जो होती है वो एक कैटाबॉलिक एम्फीबॉलिक पाथवे को फॉलो करती है। मतलब इसके अंदर एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस भी होती है और कैटाबॉलिज्म मतलब डिग्रेडेशन भी होती है। तो सिंथेसिस की बात करें तो जब हमारी बॉडी को फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम्स है या पायरुविक एसिड है या अमीनो एसिड्स है वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स के अंदर रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह हमारा हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं हमारे आगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ग्लाइकोलिसिस जो है हमने बताया कि साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है और इसके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो ऑलवेज एक एनएरोबिक प्रोसेस होती है। मतलब इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, बट सेल्स विल नॉट यूज़ इट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस और फॉर द ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा एनारोबिक प्रोसेस होती है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। पहला होता है फॉस्फोराइलेशन, सेकंड होता है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज एंड थर्ड होता है ऑक्सीडेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। अब इनके भी फर्दर 10 सब स्टेप्स होते हैं कंबाइंड। तो हम एक एक सब स्टेप को पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्साकाइनेज और वी कैन से ग्लूकोकाइनेज और Mg2+ ऐसा कोफैक्टर। सो फर्दर अगर हमें ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना है उससे पहले मैं आपको आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनस नेचर के कैटलिस्ट मान लो या फिर या इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट जो कि बूस्टअप करता है स्पीड को इन ऑर्गेनिक प्रोसेसेस, नॉट इन एनी अदर प्रोसेस, इन ऑर्गेनिक प्रोसेसेस के अंदर हमारी
स्पीड को बूस्टअप कर देता है, तो उसे एंजाइम कहते हैं। मेनली ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होते हैं जिनके जो एंजाइम की फॉर्म में होते हैं। अब हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर हमारा खाली प्रोटीन पार्ट ही हो तो सिंपल प्रोटीन मतलब सिंपल जो होते हैं वो हो जाता है, क्या कहते हैं, एंजाइम होएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप मीन्स अदर पार्ट देन अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड के अलावा भी कोई अदर पार्ट है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी ऑर्गेनिक पार्ट और कैन बी अमीनो सॉरी व्हाट वी से इट मेटल आयन। तो अगर वो मेटल आयन होगा तो वो कोफैक्टर होगा। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर पायरोल रिंग्स होती है, 4 पायरोल रिंग्स, और बीच में हमारा क्या होता है, आयरन होता है। इसी तरह क्लोरोफिल के अंदर हमारा बीच में Mg2+ हो जाता है, तो वो एज अ कोफैक्टर होता है। और इसके बाद हम अगर ऑर्गेनिक पार्ट हैं तो कोएंजाइम्स हो जाते हैं। तो हम कमिंग बैक टू द ग्लाइकोलिसिस, तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्साकाइनेज एंड Mg2+ एज अ कोफैक्टर। इसके अंदर एटीपी जो है वो यूज़ की जाती है, 1 मोल ऑफ एटीपी इज़ यूज्ड। इसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर आइसोमर्स, सो इसके अंदर एंजाइम इज यूज्ड, एंजाइम दैट इज यूज्ड इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट, fructose 6 phosphate is then converted to fructose 1,6 diphosphate with the help of phosphofructose kinase, fructokinase, एन Mg2+ इज अ कोफैक्टर। और इस केस के अंदर भी हमारी 1 मोल ऑफ ATP इज यूज्ड। So this was the phosphorylation process. Next is splitting of the glucose. Now fructose 1,6 diphosphate is converted into two, or it splits into two, that are, first one is dihydroxy acetone phosphate in the presence of aldose as an enzyme, and second one is glyceraldehyde 3 phosphate. It is also in the same presence of enzyme, same enzyme, that is aldose. 1 mole of dihydroxyacetone phosphate and 1 mole of glyceraldehyde 3 phosphate is formed. Now the dihydroxyacetone phosphate convert into glyceraldehyde 3 phosphate with the help of triose phosphate isomerase as enzyme. So here we get 2 moles of glyceraldehyde 3 phosphate. Uh, After that, glyceraldehyde 3 phosphate is then converted into 1,3-diphosphoglycerate with the help of glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. Now splitting is done. We are talking about oxidation by dehydrogenation. So first enzyme we used is dehydrogenase, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. So now 1,3-diphosphoglycerate is then converted to 3-phosphoglycerate with the help of phosphoglycerate kinase as an enzyme. And in the first step which we talk about, what we were talking about, glyceraldehyde 3 phosphate convert to 1,3-diphosphoglycerate and 1,3-diphosphoglycerate convert to 3-phosphoglycerate. In this process 2 moles of NADH is produced. NADH is also a form of energy, and 1 NADH is equals to 3 ATP. तो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, 3-phosphoglycerate. After that 3-phospho, it converts to 2-phosphoglycerate with the help of phosphoglycerate mutase, and 2-phosphoglycerate convert to phosphoenol pyruvate with the help of enolase as an enzyme, and to what we call it, sorry, water is released in this process, and at last the phosphoenol pyruvate is then converted to pyruvic acid with the help of pyruvate kinase
as enzyme and Mg2 plus as a cofactor, and in this process we get 2 moles of ATP is generated. So here we have talked about the glycolysis. Now we will talk about the whole ATP that are produced during the glycolysis. So total ATP are produced 4 moles of ATP. Uh, 2 moles were produced during pyruvate. Pyruvate was synthesized by the phosphoenol pyruvates in the last step, and 2 moles were synthesized during uh, that 1,3 diphosphoglycerate converted to 3 phosphoglycerate. So 2 moles are converted are produced there. So total 4 ATP are produced, but 2 ATP are used. One was used in the first step, as we remember, during the phosphorylation. Glucose is converted to glucose 6 phosphate, so ATP is used, right? And second one, ATP was used during fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 diphosphate. So overall 2 ATP are produced directly in glycolysis, and 2 moles of NADH is produced, which we use which will convert into ATP during oxidative phosphorylation, which we will talk on later on. So now we will talk about the pyruvate acid which was formed and what will be its fate. So the next topic is fate of pyruvic acid. अब पायरुविक एसिड का फेट हमारा डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वेदर एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक पाथवे फॉलो करता है तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. दैट प्रोसेस इसके अंदर CO2 रिलीज हो जाती है और वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाती है. अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है हमारा सिट्रिक एसिड के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट. ये प्रोसेस होती है क्रैब साइकिल, और सिट्रिक एसिड जो है वो बाय सब स्टेप्स कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटेट, जो दोबारा रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम में, और दोबारा सिट्रिक एसिड देता रहता है. तो इसी तरह ये साइकिल चलती है, तो इसलिए इसे क्रैब साइकिल बोला जाता है. इसके बाद इसके अंदर हमारे जो NADH जो हमने पहले भी पढ़ा था, और FADH एक न्यू टाइप की एनर्जी आएगी. ये सब एनर्जीज रिलीज होती हैं, और ये एनर्जी आखिर में हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या करती हैं, हमारी ATP में कन्वर्ट हो जाती है. दिस वॉज एरोबिक पाथवे. अगर एनारोबिक पाथवे फॉलो करें तो मीन्स एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे क्या होएगा, तो उस टाइम पे होएगा कि वो फर्मेंटेशन के अंदर चला जाएगा. पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा. इसके अंदर अब फर्मेंटेशन भी दो टाइप से होता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब जब लैक्टिक एसिड या लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट बाय द NADH, जब डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है, जो कि हम फर्दर डिस्कस करने वाले ही हैं. I am just giving a brief fate of the pyruvic acid. Fermentation will be discussed on later on. So second one was alcoholic fermentation. So what is alcoholic fermentation? When pyruvic acid is converted into alcohol, that is called alcoholic fermentation. Now if we talk about the example of lactic acid, we have heard about it in our daily life, right? We get cramp during heavy exercises, usually running. When we run so fast, sometimes there's a pain in our knee or in any other joint or muscle. That uh, is because of the formation of lactic acid, and that pyruvic acid is converted into lactic acid, and that is stored in there as a lactic acid, and which will is ultimately called cramp. Okay, so we got cramps in muscles, right? During heavy exercise or in absence of oxygen हो जाती है तो we get cramps. Similarly, pasture effect is also there, means that we get cramp, but after some time it got healed, or it got cured automatically. How it happens? Because of the pasture effect. Means when we sit down for a while and take enough oxygen, so that lactic acid again convert into pyruvic acid, and pyruvic acid after that follows the aerobic pathway. In this way, that lactic acid or that anaerobic pathway was inhibited.
So pasture effect is called inhibition of that anaerobic pathway or anaerobic process inhibition. So that lactic acid is then converted back into pyruvic acid, and which further goes to the aerobic pathway and we get energy. Okay, so later on, now we will talk about the second step of our respiratory cycle, that is Krebs cycle. So Krebs cycle, it takes place in mitochondria. So glycolysis was in the cytoplasm. So how it went, how it goes to the mitochondria, it takes 2 moles of ATP to transport this the product of glycolysis to the mitochondria, where the Krebs cycle take place. Our Krebs cycle take place in mitochondria in the inner membrane, that is called cristae, and there is a fluid called matrix in that. Okay, now Krebs cycle. Before Krebs cycle, oh, there are other name of Krebs cycle, as I have told you. Like Krebs cycle is used to form citric acid. Citric acid cycle is also is its other name, and citric acid contains three carboxylic groups. So tricarboxylic acid cycle is it's one of the names. So this was Krebs cycle. Now we will talk about the sub steps that are involved in the Krebs cycle. First is pyruvic acid is converted to acetyl coenzyme A. This is not a part of Krebs cycle. It is oxidative decarboxylation, but we study it as a part of Krebs cycle because it's a so small step and used in the further it get connect to the Krebs cycle, so we can study them both together. So oxidative decarboxylation, in this process carbon dioxide is released and NADH, 2 moles of NADH is formed, and in the presence of pyruvate dehydrogenase and TPP, and also lipoic acid as enzymes, and Mg2 plus is a cofactor. So that acetyl coenzyme is a 2 carbon compound, uh, and pyruvic acid is a 3 carbon compound, but 2 moles of were produced. So 2 moles of acetyl coenzymes are produced, which connect with 4 moles of oxaloacetate, and at last we get a 6 carbon compound, that is citric acid. But that citric acid convert to oxaloacetate with few steps. First step is acetyl coenzyme A convert to citric acid with the process of citric synthase as an enzyme, and here one interesting thing happened, that is water is converted into coenzyme A. Now citric acid is converted into what we call it cis aconitate with the help of aconitase as enzyme. Now cis aconitate converted to isocitrate with the same enzyme aconitase. Isocitrate converted to alpha ketoglutarate by a substep, or by direct with the isocitrate uh, dehydrogenase as enzyme, or there is a substep, that is isocitrate convert to oxalosuccinate. Here NADH is produced, and that oxalosuccinate converted back to the alpha ketoglutarate. Here CO2 is released and carboxase is used as an enzyme. Later on, that alpha ketoglutarate is converted to succinyl coenzyme A with the help of what we sorry, I forget the name. Yeah, NADH. NADH is since what we call it is formed here. Then succinyl coenzyme A is converted to succinate with the help of succinyl coenzyme synthase. Here GTP is produced. GTP is we can say ATP only, other name for ATP, and GTP is also is direct form of ATP. Succinate is converted to fumarate sorry fumarate
with the help of succinate dehydrogenase as coenzyme, as an enzyme, and FADH2 is produced. This is another form of energy which gives 1 FADH is equals to 2 ATP, which we will discuss further how it is converted to ATP in the oxidative phosphorylation, which will be our next step after Krebs cycle. So fumarate, where were we? Fumarate. Fumarate is converted to mutase with the help of malate in the presence of fumarase, and malate is converted to oxaloacetate with the help of malate dehydrogenase as enzyme. So this was the Krebs cycle, and here 2 ATP is generated directly and 8 NADH and 2 FTH2. Overall, we can say 28 ATP is generated, which is which we get in the oxidative phosphorylation, which we will talk next. So next is our oxidative phosphorylation. Now we will talk about oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, I have told you earlier, like it is used for conversion of NADH, FADH, other type of energies directly to ATP. So, how it is done? It is done by transfer of electrons by electron carriers. Okay, so we will discuss it very uh, extensively. So it will take place in mitochondria first of all. It takes place in mitochondria and it's a major source of ATP generation in aerobic organisms. We are aerobic organisms, right? Animals are also, plants are also. So it is a major source of ATP. Next, how it is done. First, before talking about oxidative phosphorylation, I will talk about the structure of mitochondria. I told you that inner membrane is called cristae, right? So how cristae is formed? Cristae is a biphospholipid layer, means it is a layer uh, in which there is a polar head part, phosphate, and a uh, lipid part as a tail, or we can say non-polar part as a tail. And it is bilayer because heads are uh, on the matrix side or also in the inner membrane side, inner membrane space, right, between them. So and that lipid part, non-polar part, is in the middle of both heads. So it's a bipolar layer, sorry, biphospholipid layer. There are different proteins that are embedded or that are present on this membrane, which are uh, whether intrinsic, that are inside the membrane, extensive, that are outside the extrinsic, that are outside the membrane, or peripheral, means on the brink, or you can say on the starting or ending of the, on the starting of the, like on the terminals. It is called terminal proteins. So there are different proteins which are present on the membrane. So these proteins are very useful. There are many, they forms complexes, and the complexes are used for the electron transports, and which is useful for production of photon and energy. So we will talk about it so extensively. First we will talk about first protein complex which is present, or the starting of the oxidative phosphorylation or electron transport chain. So that oxidative phosphorylation contains two basic processes, that are, first one is electron transport chain and second one is chemoosmosis. Electron transport chain is just like a metabolic process in which NADH and FADH2 are oxidized, gives electrons, and the electrons uh, passes through a chain of electron carrier from one to another. In that process,
At last it mate with oxygen and proton. Oxygen splits and it combines with hydrogen and gives water. So this is called electron transport change, where there are transport of electrons from one part to another. Similarly, there is not similarly, sorry, chemoosmosis is that during the process of electron transport there is release of energy because of the transport of electrons from higher to lower levels. So there is a release of energy. So due to the release of energy there is a pumping of protons, which generates a gradient, means which makes the concentration of H positive ions in the inner membrane space more, due to which there is a proton gradient between inner membrane and matrix. So it forms gradients due to which that there is a pumping of protons, and that protons at last goes through the protein complex 5, which we will discuss further, uh, and converted into ATP. So this is called the chemoosmosis. This was a brief about electron transport chain and chemoosmosis. We will talk about everything step by step. So first, I will tell you which proteins are used. Sorry, which protein complexes are used, and later on I will discuss the step by step process. So first is protein complex first, which is used in the process or starts the process. So protein complex 1 is also called ubiquinone reducto oxidase. Sorry, oxidoreductase. I just reversed the name. Sorry for that. Ubiquinone oxidoreductase is its name, and it contains a prosthetic group FMN and iron sulfur clusters. So when NADH is oxidized, it gives it converts to NAD positive and releases electrons, which are carried by FMN and just transfer from iron sulfur clusters, and it combines with a coenzyme Q. I've told you about coenzymes, right? So coenzyme Q is also called quinone, which is present on the protein complex 1. So it combines with Q, and that quinone is takes that two electrons and combine with hydrogen to give hydroquinone. And this is all about reversing, like oxidized form of quinone to reductive forms of hydroquinone. They got interconverted and electrons got transported again, and that electrons then sent to the protein complex 3, which we'll discuss further. First, I will tell you about protein complex 2, which is called succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase uh, is also, we have talked about in Krebs cycle, right? Remember, in the Krebs cycle. So it contains iron sulfur complexes, sorry, iron sulfur clusters, and FADH when oxidized gives H positive and electrons, which electrons are carried by iron sulfur, this succinate dehydrogenase, and quinone is also present on it, so it also get converted into quinone, hydroquinone, right? In the same way NADH. Protein complex 3, when quinone sorry when NADH1, that ubiquinone oxidoreductase uh, transfer electrons to the protein complex 3, which is cytochrome C reductase and oxidase, cytochrome C, right? Its name. So when it transfer to the lower one, that protein complex, there is a pumping. So NADH, and there is a pumping, and then four protons get to the inner membrane space, which is called pumping, and create a proton gradient. Similarly, FADH also go transport that hydroquinone, and that also transport to what we call it protein complex 3.
cytochrome C. So there's two electrons, cytochrome C, sorry, B, there is a cytochrome B, sorry, and protein after cytochrome, uh, uh, from the transfer of cytochromes C complex, it transfers to cytochrome A1, A and A3 complex, sorry, A and A3 enzymes, and at last to the protein complex 5, where it converted to ATP. So this was a brief, but now we will talk about the steps that are involved in the oxidative phosphorylation. So first, what was there? Quinone oxidized, releases two electrons and trans becomes hydroquinone, and reverse. So there are two electrons transport from there to cytochrome B in the reduced form. Uh, Sorry, in the oxidized form, which get reduced by releasing of two electrons, and it back after gaining electrons, it returns to the oxidized form. Cytochrome C is mobile coenzyme, so it will transport them to the cytochrome C1 oxidized form, where it gets reduced to cytochrome C1 reduced form, and again to cytochrome C1 oxidized form by releasing of two electrons again. So these two electrons get to the cytochrome A, sorry, oxidized form. To uh, gaining electron, it become reduced one. So cytochrome A reduced, which get converted back to cytochrome oxidized form, A oxidized form, after releasing two electron, and it to get transferred to the cytochrome A3, that fourth complex we are talking about. So cytochrome A3 oxidized, which get reduced by gaining two electron, and get again uh, oxidized by releasing two electrons, which further react with oxygen and with proton, which together form water, right? So this was the electron transport chain. And chemosmosis, that the pumping during the electron transport chain, that hydrogen passes through the ATP synthase enzyme or protein complex 5 and gives ATP. This was electron transport chain and chemosmosis. Now we will talk about briefly talk about the steps. As systematic steps involved in the oxidative phosphorylation, there were four steps involved. First step is delivery of electrons by NADH and FADH2. What it is, in simple words, जब FADH2 और NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज़ होता है, तो वो ट्रांसफ़र होते हैं वन टू अदर। इससे क्या होएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी ट्रांसपोर्ट चेन की। इसके बाद होता है सेकंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और प्रोटॉन पंपिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होएगा फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स पे। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पंप हो जाते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो उसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है। तो दिस पंपिंग एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। Now step 3. Step 3 is splitting of oxygen to form water. And the end of the electron transport chain, we discuss that water is formed. So that is also called the splitting of oxygen to form water. This was the end of electron transport chain. And the last step is gradient driven synthesis of ATP, means as hydrogen ions flows down their gradients and back into the matrix, they pass through an enzyme called ATP synthase, which I have told you. Like if they passes through the ATP synthase, there is a part. How it is? There is a head, there is a stalk, and there is a base. Base is F0 and head is F1. So when it passes from the base, it enters from the base and it's just converted into ATP and flows of proton to synthesize ATP. This was chemoosmosis. So this was all about oxidative phosphorylation.
And in this way we converted our uh, the left one energies into ATP, which is used by our to fulfill our life processes. Next is we are gonna talk about our last topic, that is fermentation. Fermentation. I've given you a brief introduction about what is fermentation. Fermentation takes place when there is an anaerobic respiration pathway is followed by pyruvic acid. So now we will talk about it in detail. So what is fermentation? Fermentation is a common way, right? It's so common. We can see fermentation everywhere in our life. It's so common. So it's uh, getting energy from the food by the path of anaerobic respiration. In simple terms, we can explain fermentation as like that only. So similarly, some living systems instead, तो फर्मेंटेशन हमने देखा कि फॉर्म होता है, मतलब पायरुवेक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फर्मेंटेशन ही कहलाती है। तो फर्मेंटेशन की सिग्निफिकेंस क्या है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारा NADH जो है, NADH जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है NAD+ में, जो कि यूज़फुल होता है हमारा टेकिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस फर्दर, मतलब ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए हमारा यूज़फुल होता है। लेकिन वो तो हो नहीं पाएगी अगर NADH अगर ब्रेक डाउन नहीं होएगा। तो फर्मेंटेशन वो इंश्योर करती है कि वो उसकी साइकिल ना टूटे और वो ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हो जाए। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ फर्मेंटेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस। तो जैसे मैंने लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज व्हेन जब जो NADH जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है पायरुवेट एसिड को, और वो लैक्टेट एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है, तो उस केस के अंदर हम उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अंदर क्या होएगा कि लैक्टेट बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो लैक्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेटेड लैक्टिक एसिड। तो उसी से इसका नाम पड़ गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इससे हमें क्या डेफिनेशन मिली कि जब हमारा NADH जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है पायरुवेट एसिड को, हाइड्रोजन्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है NADH, तो उससे क्या होता है पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, लैक्टेट में एज अ बाई प्रोडक्ट। तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है कि हेट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है या होमोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। होमो मीन्स हमें यूजुअली पता होता है, होमो मीन्स सेम, मीन्स सेम चीज़ ही, मतलब लैक्टिक एसिड ही मिले हमें सिर्फ सेम। और हेट्रो मीन्स ये नहीं कि अलग अलग लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड तो मिले ही मिले, लेकिन उसके अलावा भी हमें एक दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिले, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि होमोलैक्टिक में जब सेम ओनली लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड सो होमोलैक्टिक, और अगर देर इज अनदर बाय प्रोडक्ट with the with presence of lactic acid, so that is called heterolactic acid fermentation. So for example like पायरुवेट कन्वर्ट हो गया लैक्टेट में, लैक्टेट के अलावा वो और किस में, 1 मोल ऑफ लैक्टिक पायरुवेट तो कन्वर्ट हो जाए लैक्टेट में, और 1 मोल ऑफ लैक्टेट कन्वर्ट हो जाए या तो किसी एसिड में कन्वर्ट हो जाए या किसी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे हमें क्या है, 1 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड मिल रहा है, 1 मोल ऑफ अदर देन लैक्टिक एसिड हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो हेट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। दिस वॉज अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के हमने कॉमन एग्जांपल्स भी देखे हैं, हमें यूजुअली पता भी होता है, वैसे नाम नहीं सुना होता बट वी नो। अगर मैं जैसे एग्जांपल दूँ, कर्डलिंग ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। उसी तरीके से हमने देखा है मसल्स के अंदर क्रैम्प होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ही होती है, तो फर्मेंटेशन वो भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है बट वी डोंट नो द नेम, दैट इज़ विच आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ इज अल्कोहल फर्मेंटेशन। alcoholic fermentation as similar lactic acid fermentation means formation of lactate, so here formation of alcohol is called
Alcoholic fermentation. So pyruvate converts to alcohol here. Uh, what is example of alcoholic fermentation if we talk about? So it is like uh, we know the wines and beers, so common, formed by yeast fermentation. So ethanol is formed, right? So that is called example of alcoholic fermentation. It occurs in two step. That alcoholic fermentation usually don't take place in the one step. It is a two-step process. First, in the first step, that pyruvate, सो जो हमारा पायरुवेट है वो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को लूज़ कर देता है एक को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, दो कार्बन प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। अब जो एसिटल्डिहाइड है, जो NADH है, वो डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, जिससे क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाते हैं NAD+, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बेनिफिशियल है। तो और रीजनरेट होने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं उसे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल में हो जाता है मोस्ट कॉमन। तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इट टेक प्लेस इन टू पार्ट्स, and I told you examples also. Now, at last, as a conclusion, I'll talk about the significance of fermentation, or where it is used in common life, in everyday life, in day to day life, you can say. So, it is used in bakeries. The most common example, the cakes we eat, the breads, the biscuit, all need fermentation for their taste. Second is in breweries. Breweries means where wines and beers are formed. So there also it is used. In daily life it is used to make different dishes. We have each dhokla, dosa, bhatura. Bhatura is so common, right? In North Indian, South Indian, both can relate with that. Uh, idli also, and that dosa, dokla, all are fermented food and which are also beneficial for our health. So it is also a significance of fermentation, or you can say application of fermentation, and it is also used in tanning of leather, curing of leather, and also in formation of vinegar, which we use in our household lives. And all, uh, in this way we can say fermentation is very useful process, and we can see its significance in our life. Thus this was the presentation I have shared with you. I hope you like it. Thank you.